So just hold on. सब अपने वीडियोस ऑफ कर दीजिए प्लीज. एंड so the word science originates from the Latin verb scienta, that is meaning to know. The science is a systematic attempt to understand natural phenomena. कल हमने डिस्कस किया था. Yes or no? Science is a systematic attempt to understand natural phenomena in as much detail and depth as possible and use the knowledge so gained to predict, modify, and control the phenomena. Okay, so science is all about exploring, experimenting, and predicting. You explore, you do some experiments, and then you predict what you see around us. Okay, that is the beauty of science, and that is why all of you are interested in understanding the various phenomena. All of you want to become engineers and all. Okay, now this curiosity, which is very inherent to humans, to learn about new things and to understand why something is happening the way it is happening, that leads us to the foundation of the development of science, right? The rate at which science has developed in the recent past, like 200 years, has been exponential. It is tremendous. Okay, now there are certain interconnected steps in the development of science. Okay, now this is what you are supposed to write. आपको इतना portion लिखना है. This is what you are supposed to write. Then I will ask you guys to explain me what is the meaning of step 1, step 2 and all that. Sir, topic. This is science. Topic is science. The topic is science. It is introduction to your physics. ये आपको लिखना है. तो आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा. First is systematic observation. So what do you mean by systematic observation? Then what is the meaning of control experiments? These all 6 steps, they have to be taken care of while the development of science takes place. It's a ever evolving system. There is nothing static in it.
The theory that is proposed today might get refuted after 2 3 years based on some advanced calculation or advanced sophisticated instrument involvement. So, can somebody explain me the 6 steps that are written over here? Whatever that you can make out, जो आपको समझ में आ रहा है बताइए. Sir, Malhar is raising hand. Yes, Malhar. So, for example, we take the example of gravity. So, when it was observed that apple is falling down or any other thing, we observed that everything that, up which is always comes down. That is the observation we did. Then we conducted the experiments related to it, and at last we got a reason why it's going down. That is because of gravity. Then we got the formula of that force, like F is equal to mf. And then at last we, uh, Understood. yes, and then we got the law. Okay. Anybody else who would like to add here? Dhanraj is wanting to say something. Yes, Raj. For example, the atomic table, so it was designed by various scientists, and there were some faults. Then verification went, and everything happened. So it was in a systematic manner. Everything happened. Then experiments were done on if the arranged elements are in proper series or not, and then there was a reasoning, and then the law came, and we have the atomic table today. Okay. Anybody else? Sir, Aditya Verma. Yes, Aditya. सर साइंस में हम लोग अपने सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट को पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, फिर उसके पीछे क्या रीज़न है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर उसका मतलब एक उसका एक फॉर्मूलाज या जो भी है वो फॉर्म करते हैं, फिर उसके प्रेडिक्ट किया जाता है कि उससे आगे क्या हो सकता है और उसके लॉस बना दिए जाते हैं, फिर जो थियरीज है उसके रिलेटेड उसको ट्रू साबित किया जाता है या तो उसको गलत साबित किया जाता है. ओके चलो, लाइक मोस्ट ऑफ यू सेड, तो आपका मोस्टली करेक्ट है. ठीक है, आई विल स्लाइटली इलैबोरेट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है, सो लेट्स look at the first point, that is systematic observation. Okay, so there are clearly defined ways by which you have to perform the observation. Okay, when I say observation, that means now this first step and second step, they are correlated. As I told you yesterday that science, or for that matter physics, they are all objective studies, right? Objective means you have to have certain measurable things in your control. So let's say you see rainbow formation in just after the rain. So it's a very beautiful phenomenon. But when it comes to realizing a theory out of that phenomena, you have to come across, you have to design a system wherein you can make observations. So your observations have to be very subjective in terms of what is the angle made by the semicircle of the violet ring in the rainbow with respect to the horizontal, or that for that matter the red ring or the yellow ring. So it's not just that you will observe Vibgyor, you have to observe other parameters which are measurable. Okay, so you have to define what are you going to observe, and that observation has to be objective in nature. That means आप उसको record कर सकते हैं, mathematical उसकी readings आप लिख सकते हैं. You can say the angle is 41.8 degree for the violet and 41.7 degree for the red. So that is something which is objective. ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? Now you have to have control conditions to perform the experiment. Let's say you are trying to measure the temperature of
a chamber during a reaction. Okay, some polymeric reaction is taking place in a chamber, and you are doing that experiment, but you have no control. Sometimes you mix 5 grams of the reactant, sometimes you mix 10 grams, sometimes the lid on the top is open, sometimes it is not open, sometimes it is closed. So you do not have clearly defined steps to follow to perform the experiment and obtain the results. Is it clear? So you should have control over each and every setup of the experiment. Then you have to take observations which are objective in nature. It should not be subjective. Okay. Then once you have data in your hand with all possible varieties of variation that you could have achieved in the experiment, like you change the masses, you change the temperature, you change pressure, whatever the objective parameters are, you try to bring in as many variables as possible and take observation. तो आपने वो एक observation create किया tabular form के अंदर. You have lot of data, maybe 10,000, 15,000, 1 lakh data points, right? Now when these data points are reasoned with, हमने उसके पीछे एक mathematical model बनाने का try किया. When I say mathematical model means how one function varies with the change of other variable. टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर में क्या चेंज आया, प्रेशर चेंज करने से मास में क्या चेंज आया, राइट? तो उसके बीच में जो आपस में इंटर रिलेशनशिप है उसको हम एक मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं. ठीक है, फॉर दैट देयर आर एडवांस टूल्स विद अस राइट नाउ. बेस्ड ऑन दैट मैथमेटिकल टूल्स यू विल रीजन आउट कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कम करने से प्रेशर कम होता है, और मे बी यू कैन से देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रेशर. So whatever reasoning is there, that has to come out of the experimental results. जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स आए हैं, एक एक रीडिंग को आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद में आपके पास एक रीजनिंग आएगी. बेस्ड ऑन दैट you will predict or you will give a law. Now what is the difference between prediction or giving out a law? Prediction means you are trying to predict the outcome based on variation of certain variables. Okay, so based on maybe that prediction will work around with your previous laws that you already know. कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर आपने ऑलरेडी कुछ चीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर ली है, उसके कंटिन्यूएशन में इफ यू आर डूइंग समथिंग एडिशनल तो उसके कंटिन्यूएशन में आपने प्रिडिक्ट कर दिया जब जब ऐसा होगा तब तब ऐसा मिलेगा, राइट? नो लॉ इज समथिंग विच इज experimentally verified, but you do not have a solid reason why this is happening. Okay, law is something which cannot be proved. It can only be verified with the help of experimental setup. Is this clear? लॉ क्या होता है मैं आपको देखो फिर से रिमाइंड करता हूँ, प्रैक्टिकल केस लेके बताता हूँ. सपोज करिए हम ग्रेविटेशन लॉ की बात करें, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल लॉ? Law of gravitation states that whenever two masses are kept at a separation of distance r, they exert a force of gravitation on each other which is attractive in nature. That force is given by G m1 m2 by r square. Okay, what is G? It's some kind of proportionality constant which is universal. m1 m2 are the respective masses. So this entire law has been established. It has been given out in a mathematical form by some scientist. You know that famous scientist Newton. Okay, so he did a lot of research on it. He conducted a lot of experiments. He changed mass m1, then sometimes m2. He changed the distance r1, r2, r3, and then he came to know that the force of gravitation is proportional to the product of their masses. So this is one mathematical reasoning. Okay, then
the force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between the two. Okay, so this is what you call it as law of gravitation. Now next question is, if somebody asks you why it is the way it is, why it is g m1 m2 upon r square, why it is not f is equal to g m1 r square by m2, why it is not like that? So nobody has the answer, but we know for sure that based on the experiments, extensive experiments which were verified by other scientists as well. Okay, when we talk of the last step, that is verification or falsification, it basically means that the law that has been proposed by one scientist, it does not matter whether the scientist has a good stature in society. He could be Einstein also. He could be Newton's also. But when some scientist proposes, it is not immediately accepted. It is verified by the other members of the scientific community. If they find that the law is correct, they will verify it. If it is not correct, it is not meeting out their experimental setup results. Okay, if the results proposed, the law proposed by one scientist is not reproducing other laboratories under the same conditions, then that law is not to be accepted as scientific law. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में लेटर से अनुष्का शर्मा करके एक लड़की है, राइट? अब अनुष्का शर्मा का एक एक्सपीरियंस है कि, ठीक है, इट्स अ वेरी फनी एग्जाम्पल, लेट्स से उसका एक्सपीरियंस है कि जब भी उसका मैथ्स का एग्जाम होता है, ठीक है, शी हैज बीन ऑब्जर्विंग दिस फॉर लास्ट 7 years और 10 years, कि जब जब उसका मैथ्स का एग्जाम होता है नेक्स्ट डे, उसके एक दिन पहले बारिश होती है और उसका पकोड़े खाने का मन करता है। उसकी मम्मी उसको पकोड़े बना के देती है, वो पकोड़े खाती है, उसका मूड अच्छा हो जाता है, नेक्स्ट डे वो एग्जाम देती है एंड शी गेट्स 100%, उसको 100 out of 100 आते हैं, एंड दिस शी इज ऑब्जर्विंग फॉर लास्ट 10 years. अब अनुष्का ने डिसाइड किया कि नाउ दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव एक्सपीरियंस एंड फॉर मी इट इज वेरीफाइबल. नाउ शी गिव्स आउट अ स्टेटमेंट दैट अनुष्का लॉ ऑफ पकोड़ा. ओके, तो अब उसने स्टेटमेंट दे दिया दैट व्हेनेवर देयर इज रेन एंड द मैथ्स एग्जामिनेशन द वेरी नेक्स्ट डे, so you must have pakoda so that you get 100% marks. Will you as her friend accept this law? Raise hand. कितने बच्चे एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? Just because she is your good friend, even the best of the friends will not accept it. ठीक है, जैसे धनराज will accept. Dhanraj, tell me why would you accept? Sir, because I also like pakoras. Okay, so it basically means that both of you are not hardcore scientists by nature, right? You are bringing in some subjective element into the study of science. Okay, Abhigam, तुम बताओ, will you accept the Anushka's law? No. अगर जैसे अभी क्या नाम था, धनराज says कि उसको पकोरास बहुत अच्छे लगते हैं, तो does he or Anushka have the courage to go in front of the entire scientific community of, let's say, 5,000, 10,000 scientists across the world and read out her proposed law? कॉन्फिडेंस के साथ में अनुष्का बोल सकती है? आदित्य बोल सकता है? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता, राइट? बिकॉज दिस इज समथिंग नहीं वेरी बोल सकता. रैंडम. सर क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं है. या बिकॉज दी सेटअप, ठीक है, बहुत फनी एग्जांपल है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स. ठीक है, जस्ट टू मेक दी लेक्चर मोर फनी है, मैंने थोड़ा सा ये एलिमेंट डाल दिया है, पर आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए. अनुष्का ने जो ऑब्जर्वेशन की है, दैट वाज नॉट सिस्टमैटिक, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव इन नेचर, देयर इज नो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स. कितनी बारिश हुई, मैथ्स का पेपर डीपीएस का है कि आईआईटी जेई का है, गॉड नोज.
कोई कंडीशन में आपका कंट्रोल ही नहीं है, फिर आपकी रीजनिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, नो मैथमेटिकल मॉडलिंग, यू जस्ट प्रपोज समथिंग आउट ऑफ not following the above four steps. So unless until you follow the above four steps, there is no point in claiming that it's a law. It may be a law in some la la land, but not in on this earth. Okay. So once all these six steps are followed, that too on continuous basis, then only it becomes science. Is that clear? Yes, sir. अभी थोड़ा आपको फीलिंग आया कि जो मैं बताना चाह रहा था कल, हाउ critical is every step in the development of science. Now write this down. Science is ever dynamic. Don't write, just understand. Science is ever dynamic. What do I mean by the word dynamic? It is continuously evolving. Nothing is final. आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एक थ्योरी आई, फिर डॉल्टन की आई, फिर थॉमसन की आई, फिर बोर की थ्योरी आई, ठीक है, श्रोडिंगर की है. So what is happening is that for one particular field of study, that is atomic structure, it is continuously developing. You cannot say that this theory is final. Newton's laws of motion is final. Maybe Saksham or maybe Anushka tomorrow may come out with some new theory which is more advanced than the Newton's laws of motion. Okay, so there is no point in asserting yourself as a arrogant scientist that मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, अब इसके बाद में there is no point in discussing it further. मैंने जो कह दिया वो फाइनल है. It will Sir, not be. Dhanraj has raised hand. याहू धनराज, हाँ बोलो बेटा. Dhanraj. हाँ धनराज बोलो बेटा. Sir, I have a doubt. Okay. Sir, थोड़ी थियरीज है जो हमने बोल दी है यूनिवर्सल थियरीज है, बट हमने ऑलमोस्ट पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, तो हम कैसे उसको यूनिवर्सल थियरीज बोल सकते हैं? It is universal so far. In future it might change. ठीक है. We cannot stop our studies. We cannot stop the development of science just because of one single reason कि शायद ऐसा हो सकता है. अगर ऐसा होगा फ्यूचर के अंदर, then we will modify the theory. We'll accept new theories. Okay, but so far whatever has been told in science, they are totally reproducible. Each and every person across the world can verify it. If they find that verification is not, or there is some falsification in the theory, you go ahead and tell the scientific community. It will be improved upon. But just because we feel that there will be something more to come in future, will not let science develop. Okay, we have to continue. Sir, Yes. Malhar बोलो has बेटा. Okay, sir. also raised hand. मल्हार बोलो बेटा. Can we say that prediction is subjective and law is objective? नहीं. When it comes to science, everything is objective. There is no question of subjectivity. Sir, If Abhigam has subjective also term raised आता है, hand. it is not science. It is something different. Okay. Yes, Abhigam. सर वो जो नए एलिमेंट्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं? उसका पूरा प्रोसेस है, वो आपको केमिस्ट्री के फैकल्टी बताएंगे. ठीक है, उसको कैसे करते हैं, हर चीज की डिटेल में हम लोग अभी इनिशियली नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वी हैव वो डिस्कवरी टाइम डेफिनेटली देयर इज सम प्रोसेस. आपको पता है, जैसे मैं भी आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे को इतने क्वेश्चंस पूछ रहे हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और मे बी आउट ऑफ सेल्फ डाउट और मे बी डाउट ऑन द फैकल्टी, व्हाटएवर. तो अगर आप साइंस के अंदर कोई भी नया थ्योरी या कोई भी प्रेडिक्शन प्रपोज करोगे, तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, अभी प्रेजेंट सोसाइटी इज सच दैट देयर इज नथिंग लाइक ऑथोरिटेरियन कि मैंने बोल दिया. हिटलर टाइप का कुछ नहीं है सर. यू हैव टू हैव बेसिक सोशल साइंटिफिक टेम्परामेंट
to become a scientist. Your your theory will be dissected to the fullest. आपने सोचा नहीं होगा उसको उतने एंगल से वो लोग क्या कहते हैं डाइसेक्ट करेंगे. And you should not feel bad about it because it is all about the verification of science. There is definitely some method for every aspect of science. ठीक है. हाँ, और किसी को डाउट है? Sir, Karan raised hand. Karan Sood. हाँ बोलो करण. सर जैसे कि ओम्स लॉ है सर, वो तो सिर्फ ओमिक मटेरियल पे ही एप्लीकेबल है ना, तो बाकी में नहीं है, तो फिर उसको हम लोग कैसे एक लॉ बोल सकते हैं? तो उस लॉ के अंदर कंडीशन भी है ना. It is only verified or it is only applicable for omic materials within those conditions. उसमें कहाँ यूनिवर्सल वर्ड यूज किया है. ओके ओके सर. So every law comes with its set of limitations and all that. Universal कुछ भी नहीं है. ठीक है. We say that Sir, capital Aditya G is Verma. universal proportionality constant. बट हो सकता है फ्यूचर में जाके पता चले दैट इट इज नॉट यूनिवर्सल. अभी यूनिफिकेशन की बातें चल रही हैं. राइट नाउ द थ्योरी, the basic fundamental forces that we study in physics are four. One is gravitation, another is electromagnetic, third is strong nuclear force, fourth is weak nuclear force. Okay, so this is what is the present status. Okay, now maybe after 100 years down the line, जब आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे पढ़ रहे होंगे फिजिक्स, maybe by that time science has evolved to one unified theory that even the gravitation, electrostatic force, the magnetic force, all these are subset of one unified field force. अभी उसके ऊपर वर्क हो रहा है. ठीक है ना. तो ये वही तो दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. ये जो डायनेमिक वर्ड है उसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. नो फाइनल थ्योरी, नो अनक्वेश्चनड अथॉरिटी. कोई भी ऐसा अथॉरिटी नहीं है जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते. राइट. हाँ अब Sir, बोलो, किसी को Aditya डाउट है? wants to say something. यस आदित्य बोलो. सर ये मतलब ये वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऐसे हर बार पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे सर एक एग्जांपल ये है कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन पास हो सकती है सर, तो उसमें हम लोग ना उसको वेरीफाई कर सकते हैं और ना फॉल्सिफाई कर सकते हैं. नहीं, जब तक तुम उसको डिस्प्रूव नहीं करोगे तब तक उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अच्छा सर. क्या क्लियर? इफ यस सर. समबडी, अगर let's say all the people are very आलसी kind of people, you're getting my point. आलसी in the sense यस. तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी, सब कुछ उनको रेडीमेड चाहिए. and if let's say one हाँ. of them say something तो दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट मींस. बट ऐसा होता नहीं है. ह्यूमन रेस ऐसा है कि वो हर किसी चीज को डाउट से देखता है और उसको डिस्प्रूव करना ही चाहता है. ओके. चलिए, तो let us move fast. So there is no final theory in science and no unquestioned authority among scientists. As observations improve in detail and precision, or experiments yield new results, theory must account for them. जो नई थ्योरीज आएंगी वो उन सब नए डेवलपमेंट को कंसिडर करके ही, ठीक है, मॉडिफाई करके ही प्रोड्यूस होंगी. Now let's understand the meaning of physics. ठीक है, आप पहले पढ़ लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ. आई मे आस्क यू सम क्वेश्चंस आल्सो.
ये आपको पूरा लिखना है स्लाइड। Excuse me, sir. यस, Sir, we have to write from starting till natural phenomena. हाँ पूरा लिखना है, ये पूरी स्लाइड लिखनी है। ठीक है, पूरा लिखना है, इसलिए फटाफट लिखिए। सर ओके, टेल मी। सर इसका पीडीएफ मिलेगा हमको? हाँ मैं ट्राई करता हूँ भिजवाने का आज। ठीक है सर। अच्छा, आप लोगों के साथ यूट्यूब का लिंक शेयर हो गया है ना, प्लेलिस्ट वाला? Yes, sir. ओके, आज का भी अब आपको उसी लिंक को क्लिक करके आज का लेक्चर देखना है। डेली लिंक विल नॉट कम, इट्स योर प्लेलिस्ट फॉर योर बैच। डोंट शेयर दैट लिंक विद एनी अदर बैच or any of your friends. If we come to know that somebody else is also making use of it, then we might close down that playlist. आपका ही loss होगा। यस, अब मुझे बताइए आपको क्या समझ में आया।
Sir, Malhar has raised hand. Yes, Mara, tell me. हाँ मल्हार बोलो बेटा. Yes, sir. Physics studies for of the natural phenomena going all around the world, and it just provides the simple definitions or basic understanding about that, which is told by a law or a basic law defining that the phenomenon is happening due to some basic quantities which are like. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. Okay. और कोई कुछ बोलना चाहता है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है मालूम है? लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. In brief, what you can say is that physics is the study of matter and energy. All phenomena that take place, they fall under two purviews. One is the purview of matter and the purview of energy. Matter has some fundamental inherent property like mass and charge. They occupy space and all that. Because of mass, they have gravitational forces. Because of charge, they have electromagnetic forces. Okay. And because of certain other matter, sub-elemental matter like neutrons and protons, it has got nuclear forces as well. Now the interaction of these matter causes bodies to move, to exert force on each other, have some associated energy, right? So the entire physics is the study of matter and energy, the interaction of matter in the form of energy. Okay. So with this, I would like to conclude my today's session because I think anytime soon it will close down. कल हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे and by evening you will receive one PDF for whatever I have covered till date. That means today. Okay. अगर किसी को डाउट है तो you can ask me. Sir, when are we going to get the Google Classroom